सर कल का लेक्चर सर अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे। हाँ मैं कर दूंगा अपलोड। ओके सर। So we will start with the this status word. So I hope that you have got the difference between what is the difference between the control word and the status word. With the help of the control word, you can do the programming. You can assign the duties to each and every port, like that. What type of the devices are connected? For example, if you are having the input devices, then you can set that bit as a one D0 bit for the port A. If you are connecting the output device, you can connect the or you can set the bit as a 0. So setting and unsetting the control word is in your hand. Okay, but the status word cannot be set by any of the programmer. Only you can read the status of the status word. Okay. So for example, if somebody is confused that what is the meaning of the status word, okay, I will show into the next slide that for example, if I'm making the sum your health status, like suppose I have made a 8-bit pattern like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So for example, if you are ill, if this bit will be automatically set, so this will be set. So this meaning is that आपको बुखार आया, आपको मान लो कुछ हो रहा है, तो ये bit automatically set हो जाएगी. So as a teacher I will know that oh this bit is set as a 1, so person is ill. For example, if you are having some eye pain, I am writing as a eye pain. If this bit is set, I will guess oh बीमार भी है साथ में इसको दर्द भी है. So for example, we can set any of the health related bits like this one. So if I check any of the bit, I will get the status of your health. Okay. So how I will check? Because the thing is that this is the binary pattern. I am talking about the status word. I will say this is the binary bit pattern. And the total size of this binary bit pattern is 8 bits. So for example, if I'm getting this one like this is 3A something in the hexadecimal. So what do you mean by this? If I'm getting, I will just convert it into the binary. So this is 0011 and this is 1010. Okay. So for example, if these bits are 1111 and remaining bits are 00. So if I go to this one, if I say uh, for this example that I given on here is that it says you are not ill, but you are having some eye pain like that. For example, this is for stomach pain. I'm saying this is for stomach pain. Okay. If you are not having the stomach pain, but you are having the some leg pain, I will say like this. So like that, I will know your status that you are having the eye pain as well as the leg pain like this one. So I will check your status. Now how I will check? Because as a programmer, how I will check this one? So this is actually checked with the help of some masking pattern. It's called masking pattern. Masking pattern. So one by one, I will check with the some bit pattern. So I will set some bit pattern just like this one. That I will check this bit also. 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 So for example, if somebody has told you that please check कि उसको आई पेन है कि नहीं. For example, किसी ने आपसे कहा कि आई पेन है कि नहीं उसको जरा चेक करो. तो मैं क्या करूंगा मेरे को आई पेन के लिए जो बिट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई पेन. So I will make a bit pattern just like this. I have to check only this bit. So I will set 000 0 0 and I have to check only this bit. तो जिस bit को check करना है सिर्फ उसी को 1 रखो और बाकी bits को आप 0 set कर सकते हो. So you have this is called the masking pattern. So you are doing the masking like this. Now what you do on here is that you can just do the ending. Next you have to perform the ending operation. So if I'm getting the ending operation, what is the result of this? The result will be in the two things that if the वन beat होना pattern, चाहिए तो एक्टिव है. हाँ नहीं वो इसमें ऐसा है कि you just set if you are doing the ending. So if I'm sending if I'm doing the ending with I will tell you the procedure here. That for example I have loaded this one because this is having the sum. So I have called this one. I am just saying in 20h. Why I'm writing in 20h? Anybody?
In the previous example, why I'm writing IN28? Because the control and status register will share the same address. Okay, so I'm trying to copy the content of this port address into the accumulator. So my accumulator will be having the status word now. Okay, I will keep a backup of this accumulator bit pattern. So I used one register. So this is for backup. Okay, now come to the point on here. My status word is in this one. I have set the some masking pattern. So I will do ending operation with the bit 0 to h. So why I set the 0 to h? Why I'm doing with the 0 to h? Because I have to check your IPEN. Okay, so if you are having the IPEN, it will tell. Now how it will take? It will take the two decision. If the ending is resultant into 0 or not. Okay, so this instruction will tell J and Z. So J and Z will be says jump on the no 0. Okay, so jump on the no 0 means some bits are still 1 into this one. So I will put a label. So I'm saying as a label. Okay, और अगर ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई हो गई, जैसे मान लो कि कोई भी बिट यहाँ पे मान लो ये बिट सेट है, तो ये किसी लेवल वाली मतलब प्रोग्राम काउंटर की किसी लोकेशन पे चला जाएगा, मान लो यहाँ पर चला गया है ना, तो इसके बीच में अगर कंडीशन यहाँ वायलेट हो गई, मान लो जंप ऑन द 0, it will instruct to the program counter that go to the label location, otherwise then do the task. Okay, what task it will do? It will set that यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि आपका मान लो जो ये है, मतलब यहाँ पर ये मान के चले इज इट 0. ओके, मतलब सारी की सारी जो बीट पैटर्न थी वो अगर मान लो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जे एंड जेड यूज कर रहे हो ना, तो या तो 0 फ्लैग सेट होगा या नहीं होगा. अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है, इसका मतलब ये होता है जे एंड जेड. इफ द 0 फ्लैग इज नॉट सेट देन जंप टू लेबल लोकेशन. If the 0 flag is set, then perform this task. Okay, so do the task will be performed when the 0 flag is set. So like that, we can check the status of each and every bit. Okay, you can make a bit pattern like this one. अगर आपसे किसी ने कहा कि चलो दो चीजें आप चेक करो, उसको लैग पेन है कि नहीं, अब उसको लैग पेन भी और आई पेन भी दोनों चेक करने हैं, तो क्या करेंगे हम? What will we do? सर दोनों को 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे सर. Very good. So my beat pattern in the case of LACPEN as well as IPEN will be, I will check into the masking pattern. So masking pattern will be set just like 0 0 0 0. So this is 1, this is 0, this is 1, and this is 0. So my masking pattern is changed as a 0 AH. Okay, I will do ending with this bit pattern and then I will take the decision according to this one. So I will show you the one example that how we will check the status one. So I hope that the point is very clear that whenever you are using the status word, you can always read the status word. The first point is that microprocessor can only read the status word. For the status word, it is having the same port address that is of the control word, but the thing is that you can only read, and the control word you can only write. Okay. Now other thing is that if you want to check each and every bit, perform ending, make a mask bit and do the ending, and according to it you take the decision. Okay, do the ending and then take the decision. Got it? Okay, so I will show you that, for example, this is one problem is given of A to D converter. Okay, so the first thing is that this is one of the A to D converter. I will show you some important thing related to this A to D converter. This A to D converter is having, this is called ADC, A to D converter 570. So for example, as the name is showing, this is called A to D converter, means analog to digital converter. So at the output, it will generate the some bit pattern 5, 6, 7, and 8. Okay. At the input, I will give some analog input. So this is my analog input, and this is my digital output. Okay. So this is having the one pin as called B/C bar. Okay. This B/C bar will say you that this called blank/converter. Okay.
So the B oblique C bar pin is set blank oblique converter. एक पिन पर दो फंक्शन है ना. जब भी आपको ये कन्वर्जन स्टार्ट करना है, when you want to convert this analog input into the digital one, so for example I am taking this D0 to D7. Okay, this conversion will be start when I am getting the active low pulse. Okay, if you want to stop the conversion, means my conversion will be start. If I send here this pulse at this pin, my conversion will be stopped. Okay, I hope the meaning is clear about B oblique C bar. Okay, now when I will send this pulse, my conversion will start, and finally what will happen, this conversion will be available here like in this form 1 0 1 1. If I'm taking one random example for that one, 0 0 0. Now come to the point when I will get that it has done the conversion, because अभी मेरे को पता नहीं है कि conversion इसने किया कि नहीं किया. So there is a one pin is called DR bar. So this DR bar says that this DR bar stands that data ready. This is called the data ready. Okay. So when the conversion will complete, it will inform to the microprocessor that, oh, my conversion is that is assigned to this ADC 570 is completed, and finally this conversion is available to the some port. So for example, if I connected this one to I had taken the one 8155 here. Okay, so this is my 8155, and this is I am taking on a port. So this is PA0 to PA7. So it says that after the conversion, it will send the data, the final output of this A to D converter on the port. So obviously it will be stored into the buffer. So this A to D converter will act like what kind of device? Anybody will tell me? Whether it is input device or output device? The input device. Yes, it is input device. So obviously this DR bar will act like a what type of the signal? इसने conversion करके यहाँ रख दिया है buffer में, तो ये DR bar किसकी तरह act करेगा? This DR bar will be act like a strobe. Okay. Now जैसे इसने strobe किया, ये final conversion को ये यहाँ पर buffer pool से send कर देगा, and finally it will send the signals to the microprocessor. So you can think about that. This diagram, the same diagram is connected like this one. Okay, so you have to start the conversion. तो यहाँ पर वही जो मैंने बताया था वो वैसा का वैसे करा हुआ है. बस इसमें बस यही है कि आपका जो है वो पोर्ट बी पे मैंने एक एलईडी कनेक्ट कर दिया है, आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द पोर्ट एड्रेस अकॉर्डिंग टू दिस 328 डिकोडर? व्हाट इज द पोर्ट एड्रेस दैट आई एम गेटिंग हियर? What is the port address of this PA0 to PA7? Please look at the figure and then tell me what is the port address. सर 21H से 28H तक. How you will say that this 20H? नहीं सॉरी. How you will say it is 20 to 20H? Any idea for that? Please tell me. Anybody from yourself please justify कि ये एड्रेस क्या है? इस पोर्ट ए का एड्रेस क्या होगा, पोर्ट बी का क्या होगा, कंट्रोल रजिस्टर का क्या होगा? What is the address? Because I had taken the output from this 13, 12 and 11, so it will be obviously 100. So my O4 will be selected. So O4 will be selected when this is having the combination like this one, and this bit pattern should be 000. Okay, so this is according to this. If I am having 00100, so it is just like this. I am not taking here A8, A9, A10. Okay, so these are considered as a don't care, because this will be reflected by the bit pattern A0, A1 and A2. So according to this, I will say here it is having the some pattern just like this one. If it is this A8, A9 and A10, ये तीनों बीट पैटर्न अगर वैल्यू ले रहे हैं A0, A1 और A2 की, आप बताओ what is the port address for this? So obviously the port address for the control register will be 20H. So I written here, this is 20H.
20H, 21H, 22H, 23H, and this is like this. Okay, so how you will start? Means I want to send this one. So can you anybody tell me that ये कौन से alternative में connected है? Can anybody tell me? ये port C कौन से mode में connected है? Because port C is having 4 different modes. It's called alternative 1, alternative 2, alternative 3, and alternative 4. Which mode is feasible? Anybody? And what will be the control word? Now please tell me, because you are saying that the port A is acting like a input device, the port B is acting like an output device, the port C is having some different thing. Whether I am using interrupt or not, you have to justify yourself, and then finally you have to tell that timer is working or not. Okay, can anybody say me the total bit pattern for the control word according to this scheme? What is the control word? So the control word is defined here. Any question in the control word? The control word is coming as a 06H. Okay, why it is coming as 06H? The description is given into the figure that if you are using this one as an input, so this bit pattern should be 1, because I have connected the A to D converter on the port A. So port A will be act like a input. Okay, and obviously the port B will act like a the output, because I have connected the 7 display. And apart from this, this is acting like port C. So port C is having, because port C is offering the handshake services to which one? The port C is offering the handshake services to only port A. Okay, so obviously in the case of this one, your alternative 3 will be work in a much better way. Okay, because you are having the 3 different combinations, just like I shown you alternative 3. So in alternative 3, you can just say 0000, sorry, this is called OO. उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, stop, buffer full, and this is your INTR. Got it? Got it? So that's why it is acting like this one. अगर आपको याद रखना है तो उसको ऐसे भी रख सकते हैं कि ये जो बीट पैटर्न रहती है अल्टरनेटिव की, ये मेरी PC0 है, ये मेरी PC1 है, ये मेरा PC2 है, and remaining lines like PC3, PC4, and PC5. You can verify here that PC3 is actually responsible for conversion to start. So it will, I have to send here. Once I have to do like this one, I have to make this one high to low. So which bit will be responsible? This is PC3. Okay. So obviously the my PC2. So PC2 will act like a stop. Okay. अगर वो डाटा यहाँ पे पुट करेगा तो वो स्टॉप की तरह एक्ट करेगा. So obviously what thing I have to do? Now please tell me. थोड़ा सा स्टेटस वर्ड देख लें अपन इसका. क्या होगा? मतलब ये इंटरप्ट ड्रिवन में नहीं है, स्टेटस में है. इंटरप्ट ड्रिवन स्टेटस में व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल टेल यू. देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. In the case of this, you can do the interfacing in a 2 different way. If you are performing any type of interfacing, there are 2 different ways. The first way is said interrupt driven. Another one is called status check. Status check. Okay. In the case of interrupt driven, what will be happening? In the case of the interrupt driven, your 8155, which will act like a interface IC, will send some interrupt to the microprocessor. So it will, in case of this one, so this, when it want to communicate with the microprocessor, it will send the interrupt. Okay. So for example, this is the interrupt pin of the microprocessor. So it will send one interrupt signal to microprocessor. So this way is called the interrupt driven. Okay. Now in the case of this one, status check, same figure if I draw here. If this is your microprocessor and this is your 8155 or something, no interrupt line is connected with the interrupt line of the microprocessor. Okay. So now in the case of this one, the mu P will continuously check. What check? It will check. It will read the status word. It will continuously read the status word. And it will check the bit. Which bit will be responsible? It will check all the bits. And then it will take the decision. Okay. If you recall this status word here, this status word is just like this.
ओके, वी कैन थिंक अबाउट दैट। पहली जो 3 बिट है वो 3 बिट किसके लिए है? पोर्ट ए के लिए है। बाकी की 3 बिट किसके लिए है? पोर्ट बी के लिए है। और ये टाइमर है। अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो आपको अगर मान लो ये पता करना है कि कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्टेड होगी, तो जब हम इसको देखते हैं तो अगर ये INTR 1 है, INTR पोर्ट ए का अगर 1 है, मतलब हम उसको इंटरप्ट ड्रिवन मोड में यूज कर रहे हैं, है ना, इंटरप्ट ड्रिवन मोड में यूज कर रहे हैं। बफर फुल अगर पोर्ट ए का बफर फुल अगर 1 हो गया है, सॉरी फुल हो गया है, तो ये बीट जो है आपकी D1 जो है 1 हो जाएगी। इंटरप्ट इनेबल, सो interrupt enable is again the new concept. I will tell you what is interrupt enable. I think that in some slide it is there. Okay, it's not there. Show you. It's here. I think so. That. Okay, I will show you. Okay, so here we are talking about the interrupt enable. MUPI. This is your MUPI. Okay, this MUPI is having the one property that whenever you want to send the interrupt to this MUPI, microprocessor will never respond to any interrupt. Okay, because interrupt is a very important topic and this is still it is left. I will try to cover it very soon. So the property of any interrupt is that if suppose you are giving an active high pulse to this MUPI on the interrupt, okay, microprocessor will never respond to this one. Why? It says that there is some flip-flop here. There is a one flip-flop, and this flip-flop is set prior to sending this interrupt signal. Okay. So according to this, how this will be set? This will be set by a signal is called INTE. So this INTE stands for, you know that INT stands for interrupt and E stands for enable. So this is way first you have to enable or you have to set this one INT equal to 1. If this bit pattern is set as a 1, now if you are sending any type of the interrupt, now immediately that interrupt request will be recognized. Okay, we can take any example just like this one. If you are coming to somebody else's home, okay, if you are not taking the time to meet that person, okay, so obviously that person will try to ignore you. Okay, if he or she is busy. So now in the case of this, the taking the appointment is just equivalent to you have to set the INT bit as a 1. Okay, if you are sending this signal INTR, automatically this will be recognized and the microprocessor will work according to this INTR. Okay, so now come to the point, again see this status word. Now INTR, first you have to check whether this is interrupt is enabled. So this INTR and INTE is actually the part of interrupt given. Okay, so this interfacing is given into the status check. Now first we will look the figure. We will look into the figure. You got the idea about the port addresses? Tell me yes or no. How the port address is coming? This is acting like an input device. This is acting like an output device. So according to it, you can set the control word. Okay, so this is my 1328 decoder. And finally, I am doing the chip enable for that one. So if the 20H is coming, this is for the control word, and remaining you know very well that automatically the port addresses will be given. Okay, so from here one point is clear is that this is interface in a peripheral mapped IO. Why? Because I am getting the port address of 8-bit. Why? 8-bit port address. Okay, now I have done the complete circuitry. Okay, now can anybody read this program and just tell me that what this program is doing? Anybody, any idea for that one? If I'm saying MVI A06H, why I am writing this one MVI A06H? Please read this program and just tell me where you are stuck. First thing is that I have to load this IC. I have to inform that IC कि आपके कौन-कौन से port कैसे-कैसे connected है. So obviously I have to load into the control word. So for loading the control word, I will load a bit pattern into the accumulator and I will send this one into the control register. Okay, I have sent here, I want to clear my timer. Okay,
So I have load another bit pattern 0 0 and I have send on the timer. So these two bits are here to clear the timer. Any question till this point? I have covered the total 5 lines of this program. Any Sir? question? Yes. सर एक बार टाइमर एक बार और बता दीजिए सर. एक टाइमर मेरे को क्लियर करना है, मतलब मेरे को क्या करना है, कन्वर्जन टाइम भी नोट करना है. तो अपन कोई भी मान लो जैसे स्टॉप वॉच अगर यूज कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच में ऐसा होता है ना कि पहले आप उसको क्लियर करो, उसके बाद ही आप उसको आगे यूज कर सकते हैं, है ना. तो सिमिलरली मैंने टाइमर को क्लियर कर लिया. यहाँ पर जो ये मेरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मेरा टाइमर क्लियर हो गया. तो अगर मैं चेक करूं तो मेरे टाइमर के दोनों काउंट हैं वो मेरे 0 0 हो गए. यू गॉट द पॉइंट? यू गॉट द पॉइंट? मतलब 24 पे भी मेरा 0 चला गया, 25 पे भी 0 चला गया, 24 पे भी 0 चला गया. हाँ सर जो कंट्रोल रजिस्टर में D7 और D6 है सर, वो थोड़ा एक और बता दीजिए सर. वो 0 0 और 1 1 पे क्या होता है, थोड़ा वो क्लियर नहीं है. अच्छा ओके. D6 और D7 कंट्रोल वर्ड में ना. हाँ सर. हाँ, वो एक्चुअली जो रहती है वो टाइमर को ऑन ऑफ करने के लिए रहती है कि आपको अगर टाइमर ऑन ऑफ करना है तो आप टाइमर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन. तो एक्चुअली क्या होता है उसमें 4 अलग अलग बीट पैटर्न है. मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक हियर, you are asking the question about these 2 bits of control word. I'm writing this is the control word. So these 2 bit pattern are just like D6 and D7. Okay. So how many combination are feasible? So total 4 combination are feasible. This is having the no effect on the timer. So, and this will try to start the timer. है ना, मतलब गाड़ी है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक्टिवा है, मैं उसको स्टार्ट करना है तो मेरे को 1 1 बीट पैटर्न देगा तो मैं स्टार्ट हो जाएगी एक्टिवा मेरी. 0 0 अगर दे रहा हूं तो इस एक्टिवा पे ना तो वो स्टॉप हो रही है ना ही वो स्टार्ट हो रही है. अब मैंने आपसे कहा कि 0 1 और 1 0 इन दोनों में आपको कभी भी स्टॉप करना है, मतलब गाड़ी को ऑफ करना है, तो मैंने कह दिया कि आप 0 1 यूज कर लो, है ना. कभी भी मीन्स एवरी, मतलब कभी भी आपको कभी भी इन बिटवीन आपको उसको स्टॉप करना है, यू कैन यूज दिस. This says that this bit is very important. If I say you that you have to go to the 56 and then finally आपको वहां जाके आपको स्टॉप करना है गाड़ी को, तो क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही स्टॉप का काम कर रहे हैं. This 0 1 will stop at any time, that but the 1 0 will stop your Activa when you reach at the 56. Means unless and until if your target is fulfilled, this 1 0 will not be work. Okay. So the point is that here, ये जो 56 दुकान का मैंने जो एग्जांपल लिया है, you can think about that. You are loading the value of count. Okay. So for example, आपका काउंट है ना, मान लो डाउन काउंटर है, अपन एक कोशिश करते हैं कि डाउन काउंटर है. तो डाउन काउंटर में मैंने एग्जांपल लिया कि अगर वो 0F से स्टार्ट हो रहा है तो वो किस तरह से डाउन हो रहा है, 0E 0D ऐसे करके जब तक वो उसका टर्मिनल काउंट 0 0 नहीं आएगा. तो ये जो D 0 0 जो रहता है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल काउंट. मतलब जब तक उसका फाइनल काउंट नहीं आएगा वो स्टॉप नहीं करेगा. So this is the meaning of this 1 0. I hope that this is clear to Amber. भैया सर हाँ आ गया समझ. है ना सर मतलब 0 1 में अपन कभी भी स्टॉप कर सकते हैं. हाँ. और 1 0 पे अपन जब वो काउंट आ जाएगा तब तभी स्टॉप होगा. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. दिस इज करेक्ट. ओके, थैंक यू. yes. So I have covered these 5 lines. Now I am coming to this one. Please tell me that what is going on here. If I am loading this bit pattern MVI A08, so what will happen? What will happen? Now thing is that आपने ये IC को ये बता दिया कि ये IC जो है आपका पोर्ट A यहाँ कनेक्टेड है, पोर्ट B यहाँ कनेक्टेड है, इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है ना. तो ये पोर्ट A इनपुट की तरफ कनेक्टेड है, पोर्ट B आउटपुट की तरह कनेक्टेड है. अब मेरे को कन्वर्जन स्टार्ट करना है और मैंने टाइमर भी क्लियर कर लिया, मैंने 3 स्टेप फॉलो कर लिए. अब मुझे कन्वर्जन स्टार्ट करना है, तो कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव कनेक्टेड विद द PC3. ओके, सो PC3 किस पोजीशन पे आता है, तो PC3 अगर मैं कहूं तो अगर मैं यहां लिखूं PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 and this is my PC6. Okay, and like this one. First thing is that I will make this PC3 as a 1. जैसे मैंने इसको 1 किया तो पहले ये हाई जनरेट किया इसने, it will generate this high. Okay, then after the some time if I am making it low from 0
sorry, from 1 I'm making it to the 0, now it will generate a low pulse. Okay, तो एक्चुएशन कब मिलेगा, मतलब इसको, इस पिन को यहाँ पर ट्रांजिशन मिलना चाहिए कि अगर आपको कन्वर्जन स्टार्ट करना है तो पहले आपको इसको हाई करना पड़ेगा, हाई करने के बाद आप इसको लो करेंगे, तो कन्वर्जन तभी स्टार्ट होगा जब इस तरह का कोई आप वहां पर चीज फॉलो करेंगे. सो यू जस्ट कम टू दिस वन, हियर आई एम सेट द PC3 as 1, I am sending the start pulse and again I will make this bit as a 0 0. So before doing this one, मेरे को टाइमर को स्टार्ट करना है, तो टाइमर को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, what I will do, टाइमर को स्टार्ट करने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, you can think about that. This D6 and D7 as the number is asked in the last question. So this D6 and D7 bits should be 1 1 होगी तभी स्टार्ट होगा, है ना, बराबर. और कोई ये बताएगा कि ये बिट पैटर्न मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क फेस, ये बताओ कि ये 1 1 क्यों है दोनों, बताओ. सर बी से आउटपुट ले रहे हैं इसीलिए वो 1 है. हाँ, मतलब ये मेरा ए है, पोर्ट ए, तो पोर्ट ए पे मैंने इनपुट कनेक्ट करना है, पोर्ट बी पे मैंने आउटपुट कनेक्ट किया, और पोर्ट सी को भी मैं जो ये जो वाली जो बीट है, क्योंकि उसमें जो 3 बीट है, PC0, PC1, PC2, तो उसको मैं हैंडशेकिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी की 3 बिट्स को मैं आउटपुट की तरह यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने PC3 सिलेक्ट किया है, तो PC3 को मैंने यहाँ पर ये किया. लेकिन इसके पहले मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मेरे को टाइमर को ऑन करना पड़ेगा, फिर मुझे एक बीट पैटर्न जो कि PC3 को 0 कर रहा है, तो ये यहाँ पर मेरा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. पहले यहाँ तक देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं. मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया, प्लीज चेक इट. Any question in this up to this line? समझ में आया? स्टेप ये है, पहले आईसी को ये बताओ कि आपके कौन कौन से पोर्ट पे क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है, इनपुट कनेक्ट किया, आउटपुट कनेक्ट किया है, एक कंट्रोल वर्ड बनाओ, उस कंट्रोल वर्ड को कंट्रोल रजिस्टर में सेंड करो, उसके बाद टाइमर को क्लियर करना है, क्योंकि टाइमर में मेरे को कन्वर्जन टाइम लोड करना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये टाइमर को क्लियर करने के लिए है. उसके बाद मेरे को PC3 बिट पे कनेक्टेड है, क्योंकि PC3 बिट पे मेरे को ये कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, PC3 पे पहले मैं हाई भेजूंगा फिर लो भेजूंगा. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे स्टेप फॉलो करी, ये मेरा PC3 और PC. ओके, इस बीच में मैंने क्या किया, टाइमर को स्टार्ट कर लिया. तो टाइमर को कैसे स्टार्ट किया मैंने, 1 1. अगर टाइमर को मेरे को ऑफ ही रखना था तो मैं यहाँ पे ये दोनों बिट यहाँ पे 0 0 सेट करी, तो आप देख सकते हो कि पहले ये 0 6 था कंट्रोल वर्ड, बाद में ये C6 हो गया. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट. नाउ अगर इसने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने आपको क्या कहा था, कन्वर्जन स्टार्ट करने वाली चीज कैसे पता चलेगी, अपन फिर से फिगर पे आते हैं. इन दिस फिगर ये जो डाटा रेडी है, इफ दिस डाटा रेडी इज सेंडिंग एन एक्टिव लो पल्स लाइक दिस, इफ इट इज सेंडिंग एक्टिव लो पल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, you can unmute your mic and just tell me. If this bit is going high to low and low for longer duration, what do you mean this? It says that your data is ready. Means what data is ready? It says that your conversion is finally completed and your analog input is converted into the digital one. And this one is now available on the port A. So obviously what I will check here, I will check the status word and I will check this bit B2. Okay. So I am again coming to the status word. You just check it. What is this bit? It says that buffer full. If this bit is buffer full is 1, मतलब डाटा कन्वर्ट होके मेरा फाइनली कहां पर आ गया है, पोर्ट ए पर. तो इसको ट्रिक क्या यूज करिए अपन ने, इसको ट्रिक का यूज करिए, वही वाला चीज मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर मास्किंग करो. तो मास्किंग किस बिट पैटर्न से करी, 02 से. कोई बताएगा 02 से क्या है, ये मैंने दिया भी हो, क्योंकि ये बफर फुल को मेरे को चेक करना है, क्योंकि ये वाली बिट जो होती है स्टेटस वर्ड में बफर फुल के लिए रहती है. तो अगर इस बिट पे अगर 1 आ गया है, मतलब ए टू डी कन्वर्टर ने डाटा पुट कर दिया, तो ये मैंने मास्किंग करी. उसके बाद यहाँ पे चेक किया कि क्या सभी जो है वो बिट अभी 0 है. अगर सभी बिट पैटर्न अगर 0 है, ये एक्चुअली JNZ का जो रिवर्स इंस्ट्रक्शन है. तो 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, JNZ मतलब जंप ऑन द नो 0, और दूसरा होता है जंप ऑन द 0. तो जंप ऑन द 0 ये कह रहा है कि मतलब अगर सारे बिट्स अगर आपके स्टेटस वर्ड के अगर अभी 0 है, तो आप कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो. किसको मॉनिटर करते रहो, जब तक कि ये बफर फुल आपका 1 नहीं हो जाता. मैं अभी इस पॉइंट पे हूं, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप लोग
करेंगे, ठीक है। नाउ अगर ये बीट अगर 1 हो गई है तो अब मैं क्या करूंगा, फाइनली I will stop the counter. So how I will stop the counter? Obviously, I will change this one. So instead of 1 1, I will set it to the 0 1. So obviously यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो C6 से अब क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो मैंने इसको कंट्रोल वर्ड में भेजा। उसके बाद मैंने ए टू डी कन्वर्टर को मेरे को रीड करना है, मतलब पोर्ट ए को मेरे को रीड करना है। तो पोर्ट ए पर मैंने इंस्ट्रक्शन यूज किया IN21H, और जो भी यहाँ पर मेरे पास में डाटा है वो डाटा मैंने कहाँ भेज दिया, 22 पे। 21 और 22 में क्या हो रहा है, कोई बताएगा? 21 और 22 क्या है? व्हाट यू मीन बाय 21 एंड 22? 21 is you are trying to read the port A, so this is your port A। सर वो पोर्ट ए का एड्रेस और ये पोर्ट बी का हाँ, आउटपुट तो आ रहा मतलब है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि in 21H है, तो व्हाट डू मीन बाय in 20H? सर इनपुट पोर्ट ए पे आ रहा है। हाँ, मतलब ये वाला जो आपका 21 वाला जो कंटेंट है वो उठ के कहाँ आ रहा है, दिस इज कमिंग टू एक्यूमुलेटर, एंड फाइनली वो एक्यूमुलेटर वाली चीज आपने कहाँ भेज दी, 22 पे। मतलब पोर्ट ए से लिया, पोर्ट बी पे दिया। ओके, अब मेरे को क्या करना है, टाइमर को रीड करना है। तो टाइमर को रीड करना है तो ऑब्वियसली जो आपका जो टाइमर है वो टाइमर लोड हो गया होगा। अब टाइमर कैसे लोड हुआ होगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका टाइमर है, तो अपन ने yesterday we have seen that your timer is having 2 different beat pattern. So this is your timer MSB and timer LSB. So this is 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. Before starting the conversion, I am writing before starting the conversion, both the values were 0 0 0. So this was I am writing 0 0 0 1 2 3 4 5 6. I am not taking these 2 bits because these 2 bits are actually responsible for mode for this case, and for this case I will say 0 0 0 0 0 0 0 0, because I have using this count, this I am using this timer to record the conversion time. To record the conversion time. Okay, so जैसे ही मेरा conversion start हुआ, मान लो second step, when the conversion start, दोनों अपनी वैल्यू से इंक्रीज होने लगेंगे। तो पहले ये बढ़ेगा, है ना, जब तक ये आपका FF तक नहीं जाएगा ये नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ 0 0 से चालू हुआ तो पहले तो ये 0 0 से 0 0 1 ऐसे करके ये धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। फिर अगर ये पूरा 1 1 1 हो गया तो फिर ये आपका 1 1 1 होगा। बट दिस 2 बिट्स आर एक्चुअली वी विल नेवर यूज दिस 2 बिट्स, बिकॉज दैट आपकी जो काउंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ ये आएगी। तो आपको यही 2 बिट यूज नहीं करना, अब इसको भी ट्रिक से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इन दोनों को रीड करोगे, इफ यू आर रीडिंग दिस 2 timer LSB and timer MSB, you will get the total 16 bit count value. Okay, अब 16 में से I want only 14 bit. So what I will do, just come to this program once again, read it here. Okay, so if I am writing in 24H, who will reply? What do you mean by in 24H? What is in 24H? तो टाइमर के एलएसबी का एड्रेस है। ओके, तो टाइमर की एलएसबी को हमने क्या किया यहाँ पे ट्रिक से, कि जो भी इसकी वैल्यू है वो आई विल स्टोर इनटू द एल रजिस्टर, आई विल स्टोर इनटू द एल रजिस्टर, एंड टाइमर एमएसबी आई विल स्टोर इनटू द एच रजिस्टर। अब ये मैं एल रजिस्टर और एच रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये किसके हैं, म्यूपी के। ओके, जो आपका 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसके हैं। सो आई विल स्टोर इट इनटू दिस वन, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे मैंने इसको स्टोर किया, मूव एल कॉमा ए, एंड देन फाइनली इसको मैंने 25 को भी लिया। कोई बताएगा मैंने ये एंडिंग क्यों किया है 3F से? यस, क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई एम डूइंग एंडिंग, ये क्यों किया, व्हाई? आपने यहाँ से 25 को तो रीड कर लिया, लेकिन उसको एच में डालने से पहले एंडिंग किया। देखें कौन आंसर देता है।
कोई नया चेहरा जो हमेशा आंसर ही नहीं देता है कोई भी. Please give me the answer why I had done the ending with a 3F. पैटर्न भी 3F यूज किया है, क्यों? Any answer for that? Any answer? If I ask the question from anybody, Anushka Mittal, can you unmute yourself and then tell me what is the reason for that? Anushka Mittal, Divyanshu Agrawal. Now I am asking the question and few people I start to leave the class. Interestingly. Okay, there is a continuous recording that who is leaving the class in between. Anybody? Please give me the answer. सर मे बी D7 D6 0 0 हो जाएंगे तो कौन सा वाला? D7 D6 हाँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मैंने आपको यहाँ पर एक स्लाइड में यहाँ पर बताया था कि मेरे को ये 2 बिट वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास टोटल 16 बिट काउंट आ रहा है ना, तो उसमें से मुझे 14 चाहिए, तो मेरे को इन दोनों को 0 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आ गया तो ये मेरी गड़बड़ कर देगा वैल्यू को, है ना. तो ये 2 को मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी. तो डिलीट करने का तरीका, आई विल डू द एंडिंग विद द 3F. Sorry, 3F, yes, correct. And finally, I will load into the H register. Okay. So in this way, whenever you are doing any type of the interfacing, the way you have started the interfacing, it says that you should make the circuit diagram first of all, and to realize that circuit should be worked in a proper way, you should write down some instructions. Okay. So this is the way. If you are saying that, sir, I have just only draw this figure, will I get the full marks for this question if the question is coming for the 8 marks? I will say no, you will get only 3 marks out of 8. Okay, because this section was incomplete. How I will know that your interfacing is working or not? So you have to write down some instructions also. Okay. One more thing is that just come to this figure. Okay, can you please tell me the port addresses for this IC 8155? What thing I have done on here, I have connected my A8 line with the IO oblique M bar. First, very important thing that we will draw the new figure. Okay. You know that you have connected the line AD0 to AD7 just like this. Internally, it will demultiplex and it will separate out just like A0 to A7 and D0 to D7. Okay, so this is my data bus. This is especially the case of 8155. Okay, so and this is my lower order address bus. What another problem they have done in the architecture of the 8155, they have used out of these lines, they have used only line A0, A1 and A2 for 3 to 8 decoder. Okay, and the remaining line, I will say from A3 to A7 are left open. Okay, it's left open. So definitely they will be at the don't care. So this is the don't care case. Okay, so this is my line. This is the problem. If I'm doing in a peripheral mapped IO, obviously the problem will be that the status will be copied into something. So this is my A8, A9 and A10 will be having the same status of A0. So I will say the same bit pattern. Now, I am showing you this figure, just comment on this one. What I have done and what are the port address. It says that if this line, this IO oblique M bar line, I have connected with the A8, it says that if this line is 1, A8 line is 1, so this pin is IO oblique M bar. So it will deal with the only the ports. So there are total 5 different ports are actually available. The port A, port B, port C, timer LSB and the timer MSB. So total 5 ports आपके यहाँ मिल गए आपको. उसके बाद अगर ये बीट को अगर मैंने 0 किया तो मैं क्या मिल रहा है मुझे?
I will have the access of the memory. That memory is actually internally available into the 8155, and the size of this one is 256 bytes. Okay, so this bit will be set as a 0, so it will deal with the only memory. Now please try to find out the memory map. Oh sorry, port addresses. Please try yourself and then tell me, sir, what according to this diagram this is the port address. Anybody? Anybody from your side? I have connected the line A9, A10 to the 328 decoder. So 328 decoder will be having, I have connected the output from O4. तो ये O4 मतलब कब? मतलब ये बीट जो है जब तक मेरी 110 नहीं होगी, मतलब ये like that one. Here. Why I have done this one? Because I am taking the output from O4. This is clear. For G1 and G2 bar, this is actually accepting active low signal. Okay, so for the active low signal, what signal I will send here? So you can think about that. If these two bits are 111, if 12 and 13 are 111, it will generate 0 because I had done the some NAND gate connection here. तो ये दोनों जब तक 12 और 13 11 नहीं होगी, ये 0 जनरेट नहीं करेगा. तो मेरा G1 बार यहाँ पे कनेक्ट हो गया. 14 को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया, तो 14 को मैंने G2 बार से कनेक्ट किया, तो G2 बार पे क्या होना चाहिए? एक्टिव लो. और A15 मैंने कनेक्ट किया G से, तो G यहाँ पे दिख रहा है कि अपन को 1 होना चाहिए. तो यू कैन थिंक अबाउट दैट. Why had taken this bit pattern? Now please tell me, what is a bit pattern? What are the port address now? Sir, C8002 C9FF. No. I am asking the port address. Sorry. What are the port address? Any idea for that? What are the port address? Just think about that. The same thing, but here the different thing I have connected. So here obviously whatever you are saying is correct, that this chip will be selected when this is having the connection. So according to this 1011 is C, am I right? तो मेरे को पोर्ट एड्रेस निकालना है, तो कैसे होगा ये? तो पोर्ट एड्रेस क्या बनेगा मेरा? 101110 और मेरा 8 क्या होना चाहिए? 8 मेरा 1 होना चाहिए, क्योंकि मैं IO डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ. तो जब मेरा ये बीट पैटर्न होगा, तो ये कहीं पे 9 आ रहा है और कहीं पे ये C आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज C. Okay, when the C9 is here, I am getting this one. Okay, so like this way you can access both the things. So one figure you can, I am coming to the next example like that. Just think about that. What is the memory map now? According to this figure, please tell me what is the memory map. Again, I had not used line A8, A9, and A10. This is a simple interfacing as compared to this interfacing. Just please tell me. C8. नहीं, C8 नहीं आएगा. अब देखो ये फिगर चेंज है. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2. What here? If I want to select this at 155, the first thing is that the 11, 12, and 13 should be 100. Okay. So when this is 100, it is acting like a 0. Okay. So automatically it will generate the because the bit pattern that should be, क्योंकि मैंने O4 लाइन से यहाँ पे कनेक्टेड ये, तो मेरे को 100 जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने O4 लाइन, तो ये मेरी चिप सिलेक्ट हो जाएगी. अब प्रॉपर्टी यहाँ पे ये कहती है कि मैंने यहाँ पर 8, 9, 10 कनेक्ट नहीं किया हुआ है. क्यों नहीं कनेक्ट किया हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर सेम ही बिट पैटर्न रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि आपके किसके होते हैं? A0, A1. अब ये तो बहुत सिंपल है. तो यहाँ से अगर ये इंटरफेसिंग अपन ने यूज करी, व्हाट कॉम्बिनेशन आई एम गेटिंग? 20H, 21H, 22, 23, 24, 25. ये टेबल भी पूरी बनी हुई है. Is it clear? Okay. But when the line IO oblique aim bar is 1. Okay. जब ये 1 है, तो किसके एड्रेसेस मुझे मिल रहे हैं? कोई बताएगा किसके एड्रेसेस मिल रहे हैं मेरे पास में? When this line is 1, okay, what addresses I am getting? I am getting the addresses for ports. So I am getting the addresses for only ports. So this is clear. अब मुझे मेमोरी एक्सेस करना है, तो मेमोरी कैसे एक्सेस करेंगे? यही बीट पैटर्न जब 0 रहेगा,
मतलब मैं मेमोरी से बात कर रहा हूँ, तब मैं पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन IO ऑब्लिक एम बार ऑफ द म्यू पी, or sorry, I connected with the this one because this is not connected with here. This will be connected with the mu. Okay, so this is the mu p. So I connected this line with the mu p lines. This is not the connection. Okay, so when IO oblique m bar of the mu p is 1, I am dealing with the ports. When the IO oblique m bar lines of the device or the microprocessor is 0, I am dealing with the RAM. So you can think about that. What the address that I will get here? What the address I will get here? So simply कोई अगर कहें कि 256 बाइट्स की मेमोरी है तो कैसे यूज करेंगे हम? कोई बता सकता है? How I can interface 256 बाइट्स मेमोरी? आपको ये दिया हुआ है 256 बाइट्स, सिंपल सा एग्जांपल है। अपन जितनी भी मेमोरी इंटरफेसिंग करते हुए आए, सिंपल रूल इज दैट सी द साइज, how many, write down into 2 to the power n. So this 2 to the power 8 is equal to 256. So I will say total lines A0 to A7 will be required for what? For register selection. Register selection. And remaining my A8 to A15 will be go for chip selection. Simple rule. तो सिंपल रूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, आप देखो इसको। बट इसमें एक थोड़ा सा ये है कि ये जो लाइंस हैं मेरे पास में, ये जो चीज है, ये मैंने एक्स 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 इसलिए लिए क्योंकि एक्चुअली इसका स्टेटस यहाँ कॉपी होता है। ये जो लाइंस है ना, इसका स्टेटस यहाँ कॉपी होता है, तो इसलिए इनको एक्स 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 लेना पड़ा। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ डोंट केयर। 20 होगा क्या? हाँ 20 हाँ, टू बेटा वो जब मेमोरी रहेगी ना, तो मेमोरी का जो एड्रेस होता है, मेमोरी का एड्रेस कभी भी 8 बिट का नहीं आता है। द एड्रेस रेंज फॉर दिस मेमोरी विल बी 2002। आगे बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कहां तक जाएगी अगर ये 256 बाइट्स होती है? यहीं से आइडिया मिल जाएगा आपको रजिस्टर सिलेक्शन का। देखो, अगर सब बिट्स अगर मेरी 0 है 8 बिट, तो ये आ गई मेरी 8 बिट। लास्ट वाली कहां तक जाती है? मैक्सिमम तक, ऑल 1 तक। तो दिस विल बी 20। ओके, सो दिस इज द मेमोरी मैप ऑफ 256 बाइट्स। Any question? Clear? Now, there is some different thing. Okay, you can think about that. If I am not using IO oblique M bar, I am using only line A8. What will happen? I am using A8 to differentiate between the memory and IO. Just tell me what will happen. यहाँ पे मैंने बताया कि जब 8 मेरी 1 रहेगी तब मैं IO से बात करूंगा, जब 8 मेरी 0 रहेगी तब मैं मेमोरी से बात करूंगा। तो यहाँ पर आपके पोर्ट एड्रेसेस जो हैं वो कैसे आ गए? वो पोर्ट एड्रेसेस कैसे आ गए आपके? वो आपके मेमोरी और साथ में आपके पोर्ट एड्रेसेस जो हैं, ऑल दे विल कम इनटू द 16 बिट्स। सो ऑब्वियसली 16 बिट्स का मतलब ये होता है कि दैट यू आर यूजिंग दैट चिप इन अ मेमोरी मैप डायोड। सो यू आर यूजिंग दैट ports. Earlier we have seen that the port is having the address of 8 bit, but here the port is having the address. For example, this control register, if I am taking this control register is equivalent to one port, so I am getting not 8 bit address, I am here getting the address of 16 bit. So the thing is that this all the ports are normally called as a memory map. Why memory map? I told you the difference is that whenever any IO device is having 16 bit address, that is called as a memory map. Is it clear? Is it clear? This figure is clear to all of you. This table is also clear. Only the difference is that your A8 line is differentiating. You just take your A8 line. So here for the few ports combination it is 0 0 0, and for memory it will become the 0. So in the interfacing you are not using this A8 line. You have started your interfacing from A9 A10 like this one. Is it clear? Okay. So same thing is here. I explained here. Any question till now? Any question? Just look at the slide and then tell me if there are some questions still you can ask. Just try to find out how this address B900 is coming and the next address is a B900, and why the memory is having the continuous range starting from B8000
to B8 FFH? Just tell me. So with this interfacing, you are getting a hint that you can use the memory of 8155 as well as the ports of 8155 in a continuous manner. Because you can think about that. सबसे पहले आपकी मेमोरी स्टार्ट हो रही थी, वो मेमोरी स्टार्ट हो रही थी B800 से लेके B8FF. इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला एड्रेस क्या रहेगा? कोई बताएगा? B8FF के बाद मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा? What is the next address? That is the B900. So B900 I have given to the control register and B901 I have given to the port A. Okay, क्योंकि ये मेमोरी है नहीं, क्योंकि इनकी कोई रेंज तो होगी नहीं, इनको एक एक ही एड्रेस चाहिए. So you can think at that here with this example I am getting the continuous addresses. Any question? Any question till now? You can ask frankly. So on Friday, I will start the next IC 8255, which is having the same function, just like a 8155. So I will not go into the depth of what is a control word, what is a status word. I will directly start the interfacing, and then I will go to the some problem solving approach. Any question? If no question, I am stopping here. You can ask.